Namaste children, welcome to my channel. Today's topic is from NCERT class 6 chapter 11 जो देखकर भी नहीं देखते. जो देखकर भी, people who have eyes नहीं देखते, they don't seems to see anything. So this is the topic given by Helen Keller. So she is the writer of this story. Let's move into the lesson. कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं. So sometimes I examine my friends to see what they see. परखने means to check. हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी. So the situation is one of my friend came back from the forest after having a journey in the forest. मैंने उनसे पूछा आप क्या क्या देखा. So I asked him what all you saw in the forest. कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था. So his answer was nothing special. मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ. So अचरज means surprise and आदी हो चुकी which means not at all worried with the answer. So this Helen Keller is telling I don't feel surprised because I'm enough of having these kind of answers from so many persons. So I don't feel like getting these answers very surprising. मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं. So I strongly believe that who have eyes they don't see much, they see very less. क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? Is it possible for anyone to roam in the forest for hours and they don't see anything special? मुझे जिसे कुछ भी न दिखाई देती सैकड़ों रोचक चीजें मिलती है जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ. So for a person like me who couldn't see anything because as I said earlier this the writer of this lesson Helen Keller is a blind woman. So she can't see anything. So she's telling as a blind person I could see hundreds of thrilling things by touching itself. मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी चाल और चीड़ की कुरदरी चाल को स्पर्श से पहचान लेती हो. So भोजपत्र means it's a banquet leaf and चिकनी चाल means soft and cheed means pine tree, kurdari chal which means the hard bark. So I could feel the difference between the bojpat, the banquet tree leaves which is very soft and the pine tree is very hard bark by touching itself. वसंत के दौरान में टहनियों में नई कलियां कोचती हो. So during spring season I find new leaves in the branches. मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सदफ छूने पर और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है. So फूलों की पंखुड़ियां means the petals. Makmali satar, which means the velvet surface. So I could feel the velvet surface of the petals, or when I touch the velvet surface of the petals and उनकी घुमावदार बनावट means the curved texture to touch and feel itself I feel so happy. इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है. So like this I feel the magic of the nature. कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं. So गूंजने means echoing. Sometimes if I'm lucky, खुश नसीब means lucky, then when I touch the branches I could hear the birds chirping sounds and it is echoing in my ears. अपनी
अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ. When I place my fingers in between the flowing water, I feel so happy. मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है. So कालीन means carpet. I would love the pine tree spreaded leaves. Otherwise, the grasses in the ground is far better than the carpet. बदलते हुए मौसम की समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है. The end of a changing season brings new color and full happiness in my life. कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है. So sometimes I feel restless. मचल उठता है means restless, feeling restless. That means she wants to see everything, but she couldn't see. Sometimes I feel restless to see everything in this world. अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा. So if by touching itself I could feel so happy, then if I could see the same, then I would be totally attracted to those things. but जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं. But the people who has eyes, they don't see much. They see very less. इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते. The different colors never touches their senses. मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर नहीं करता. Human being never appreciate or value their ability. वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है. So the people, he'll be always craving for those which they don't have. यह कितनी दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है. So how sad it is that दृष्टि के आशीर्वाद, that means the nature's blessing, the people think the nature's blessing is it's a normal thing, whereas इस नियामत से, so with this gift, okay, with this blessing we can fill our life with joy by using these rainbow colors which nature is gifting us. So this is what the Helen Keller is telling about the people who can see everything but they don't seem to see anything. So hope I have explained you line by line. Do well, read well. Thank you.